see the properties of center of mass. सबसे पहला property जो center of mass का है कि the location of center of mass is not changed if the force no external force is acting on the whole system. मतलब suppose colliding body जो bodies है सिस्टम में, तो जो सिस्टम के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल्स है उनके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्सटर्नल अगर नहीं है, no external force is acting on the whole system, then we can say the center of mass doesn't change its position. That means the change in position of the center of mass is zero when no external force acts on the whole system of particles. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि इंटरनल फोर्स डजंट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. जिसका मतलब अगर मान लो कि एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग और इसके साथ दो मासेस बंधे हुए हैं इस तरह से, और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करके हमने अगर छोड़ दिया, तो जैसे हम ये कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को, तो ये मासेस जरूर नजदीक आएंगे इस तरह से, और अगर सपोज हमने इसको छोड़ दिया तो दिस मास विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस मास विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ये दोनों मासेस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे एंड दिस मास विल जस्ट मूव इन डायरेक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, and this mass also moves in the opposite direction. But even if both of the masses are moving, but still the center of mass will remain at the same position where it was before. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है कि center of mass will not change its position under the action of internal forces, because the force exerted by the spring on this block and this block will be just like a internal force only, and because of that internal force the position of center of mass doesn't change. दूसरा example उसका है, if there are two masses like this whose masses are m1 and m2 respectively, and suppose that they are placed in vacuum in the gravity free region like this. Suppose external gravitational force कुछ भी नहीं है, और सिर्फ इनके बीच में का जो gravitational force है, जो कि हम जानते हैं every two particles attract each other due to gravitational force. So because of that gravitational force, these particles will start attracting towards each other and experience a force which will be equal in magnitude but opposite in direction. So ये gravitational force हमको पता है कौन से formula से लिया जाता है. So this gravitational force acting on this particle m1 due to m2 will be denoted by f12, and the force acting on this particle m2 due to m1 will be given by f21. And these two forces are equal and opposite and can be regarded as internal forces. And because of these forces, the particles will just move towards this direction, in this direction. But still, even if they are moving, the center of mass will never move. It will remain at the same point as it was before. So this happens. Even इसका एक तीसरा example हम देख सकते हैं. If there are electrostatic charges, electric charge suppose यहाँ पे है, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, और अगर मान लो कि ये दोनों के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है, r इतना डिस्टेंस है सपोज, और इसकी वजह से ये जो है दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से कूलम्बिक अट्रैक्शन की वजह से जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, that can be regarded as an internal force which will not affect the motion of center of mass. The motion of center of mass is not affected by the external force. So it's not affected by the internal force. It's affected only by the external force. Remember, ये एक बात हमको अच्छी तरह समझनी है. इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है, if suppose center of mass is at rest in the absence of any external force, then it will remain at rest forever, even if the bodies whose center of mass it is are moving in different directions. तो अगर अलग अलग बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो भी रहे हैं, तो भी उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे रहेगा अगर वो रेस्ट में है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. इफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलरेडी इन मोशन with in some direction with constant speed suppose, then the center of mass will remain in the same direction with the same speed moving, and this is the first property of center of mass. Okay, using the say velocities of different particles, we can also find out the expression for velocity of center of mass. तो ये इसमें भी देखिए ठीक से
कि अगर सपोज हमारे पास सेंटर ऑफ मास का तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हमने अभी भी डिफरेंशिएट किया था, तो वैसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला को, तो टी आर बार बाई डी टी जो हमको मिलता है वो एक्चुअली हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हुआ करता है. तो दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू डेरिवेटिव टी बाई डी टी ऑफ m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus m3 r3 bar and so on up to mn rn bar, which is divided by m1 plus m2 plus that is up to mn. So that we can say that the velocity of center of mass, yeah, the velocity of center of mass निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही बनता है सिंपली कि so it will be m1 into v1 bar plus m2 into v2 bar plus m3 into v3 bar and so on up to mn into vn bar, that is to be divided by m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. तो ये जो है, this is the formula for finding the velocity of center of mass when different particles are moving in different directions with different velocities. बट यहाँ पे हमको याद रखना है कि ये जो एडिशन जो है वो वेक्टर एडिशन है. The velocities has to be expressed in terms of I bar and J bar if they are not in the same direction. If they are in same direction, then there is no need of bar. तो ये वेक्टर का कंसेप्ट यूज करने की हमको जरूरत नहीं है अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो. लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उस केस में हमको उनको I bar J bar जोड़ना पड़ेगा. और same is the case with acceleration also. If we still differentiate this further, इसको भी अगर हम differentiate करेंगे तो डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा. जस्ट लाइक वी कैन सी दिस हियर, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस r bar is going to be equal to acceleration of center of mass, which is going to be equal to the double derivative of this expression for center of mass. तो ये center of mass को अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे जब ये t स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, जब यहाँ पे r1 को लगेगा r2 को लगेगा, तो वो सब का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हमको मिलता जाएगा. और उसकी वजह से हम देख सकेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली इक्वल टू, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हमको सिमिलर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. इसमें आ जाता है m1 into a1 bar plus m2 into a2 bar plus m3 into a3 bar and so on up to last up to mn into an bar, and that is to be divided by m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn as a final. So this is going to be the formula for acceleration of center of mass. Remember, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. और जैसा कि हमने अभी बताया था कि center of mass doesn't move under the action of external force. So if there is no external force, then the center of mass will remain at rest if it is already, and it will be moving with the same velocity with the same speed if it is already moving with the same velocity with the same speed. And ये हमको इस तरह से याद रखना है. तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे फटाफट. देखिए ठीक से तो ये क्वेश्चन करेंगे. Here is questions first. It's given that the particles of equal mass have velocities v1 that is given as 4 I bar and v2 which is given as 4 J bar. The first particle has an acceleration of 5 I bar plus 5 J bar, while the acceleration of the second particle is 0. The center of mass of the two particles moves in the path of. तो हमको ये देखना है कि the center of mass जो है वो कौन से पाथ से मूव करता है. तो उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि सेंटर ऑफ मास का हमको एक तो वेलोसिटी निकालना है और दूसरा हमको एक्सेलरेशन भी निकालना है. और ये एक फंडामेंटल बात हमको पता रखनी है, याद रखनी है कि अगर कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर सपोज कुछ इस डायरेक्शन में होता है और अगर उसके एक्सेलरेशन भी अगर इसी डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर पैरेलल है, तो the particle will move in a straight line and its motion will be accelerated one, no doubt. But if suppose the velocity is this way and acceleration is suppose like this way, तो velocity और acceleration अगर opposite direction में होते हैं तो ऐसे केस में हमेशा acceleration का जो वैल्यू है वो नेगेटिव दिया जाता है velocity के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण बॉडी जो है वो
retardation follow करता है. It gets retarded. That means its velocity goes on decreasing further. And at the same time, if suppose we have this situation in which the velocity of the particle is this way and acceleration is inclined at some angle like this, तो ऐसे केस में जो होता है कि velocity is in this direction but acceleration is directed at an angle theta with the velocity. It is not same as the velocity. तो ऐसे केस में जो होता है but at least acceleration constant भी है, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि the body follows the parabolic path. ये बॉडी जो है पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ये हमको याद रखना है. इट इज इन द सेम वे एज इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे हम देखते हैं कि वेलोसिटी इज इन दिस वे बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लाइक दिस. Gravitational acceleration is directed downwards, whereas the velocity of the particle is directed in the different direction. Because of that, the particle goes on turning more and more towards this acceleration and follows the parabolic path, which is called as projectile motion. तो ये सिचुएशन है. तो ये बेसिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसे टाइप का होगा. और अगर चौथी बात सर्कल के बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो सर्कल के बारे में कभी सर्कल उसका मोशन होता है तो उसमें देखा जाता है कि अगर सपोज वेलोसिटी इस तरफ है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उसको परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली, एंड वेलोसिटी जैसे चेंज होता है तो as soon as the direction of velocity changes, the acceleration also changes its own direction at the same time. The velocity जैसे और change होगा direction में, the acceleration will also change its own direction so as to remain perpendicular to the velocity. जैसे velocity और change होगा, the acceleration will remain perpendicular to the velocity. And at every point, you can say that velocity and acceleration will be just perpendicular to each other. And then in that case only, you can say that the particle will perform on circular motion. तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का जो कंडीशन है वो यही है कि एक्सेलरेशन शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इट शुड ऑलवेज बी. दैट मींस एक्सेलरेशन शुड बी वेरिएबल इन दिस केस. तो तभी ये जाके ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. नो डाउट. अभी यहाँ पे क्या है वो चेक करने के लिए हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले सेंटर ऑफ मास का. So let us try to find out the velocity of center of mass by using the formula already we have just developed now. तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा तो m1 into v1 bar plus m2 into v2 bar upon m1 plus m2. ये फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटी निकालने के लिए ट्राई करेंगे. तो जो बनेगा हमारा m1 is going to be same as m because they are given to be the mass of the two particles be same. इक्वल मास दिया हुआ है यहाँ पे, तो इक्वल मास होने के कारण हम ये देख सकते हैं m into v1 bar, तो मतलब वो बन जाएगा 4i bar प्लस यहाँ पे m into 4j bar and that is to be divided by m plus m which is going to be 2m. So that this can be written as, अगर m कॉमन निकाल के लेंगे तो और 4 भी अगर कॉमन निकाल के लेंगे तो 4m जाएगा बाहर और अंदर बचेगा i bar प्लस j bar और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2m. So that m gets cancelled and what we are left with is simply 2 times of I bar plus j bar. तो ये हमको मिलता है velocity. और at the same time if we try to find out the acceleration of this particle, तो acceleration निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है. Acceleration of center of mass is going to be equal to the m1 a1 bar. तो देखो यहाँ पे m1 a1 bar plus m2 a2 bar that is to be divided by m1 plus m2. So if we use this formula here, then we can get that according to the given condition here, that the acceleration of the first particle is given to be this 5i bar plus 5j bar, no doubt. But the acceleration of the second particle is going to be 0. So it is going to be 0, and that's why we can use it here and say that this m into bracket में आ जाएगा यहाँ पे 5i bar plus 5j bar and plus 0, क्योंकि सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है 0 दिया हुआ और नीचे m plus m as it is, that is 2m will be as it is. So if we take this 5 again common, then we can get this 5m into bracket I bar plus j bar that is to be divided by 2m, so that this m gets cancelled once again
and we'll be left with simply 2.5 into bracket I bar plus j bar, which is, we can say clearly that the direction of this vector and direction of this vector is going to be the same, and that is why, because we can see that the acceleration is parallel to the velocity. So acceleration a bar of the center of mass is going to be parallel to the velocity vector, which means that this situation, ये सिचुएशन हो गया वो जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होते हैं. तो ऐसे केस में हमको पता ऑलरेडी कि the particle travels in straight line. That's why in this case also the particle will travel in straight line. The motion of center of mass is going to be in straight line. So that means this A is going to be the correct option. Alright. Here is the question. So you can read it. It tells us simply that two bodies of 6 kilogram and 4 kilogram masses have their velocities, that is 5 I bar minus 2j bar plus 2k bar, 10k bar, and 10 I bar minus 2j bar plus 5k bar respectively. Then the velocity of the center of mass is. So we know that the velocity of center of mass is given by the formula. So velocity v bar of center of mass is going to be equal to, उसका ये formula हमारे पास simply है m1 into v1 bar plus m2 into v2 bar, that is to be divided by m1 plus m2. Simple. So if we solve this further, then we can get this as, देखो चेक करो कटिंग से, ये पहले सबसे पहले पार्टिकल का मास कितना है, m1 is given to be 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 into इसका जो वेलोसिटी है वो है 5 I bar plus minus 2j bar plus 10k bar, and m2 is given to be 4, and this velocity is given to be 10 I bar minus 2j bar plus 5k bar. तो अगर हम ये पूरा सॉल्व करेंगे आगे, and नीचे m1 plus m2 मतलब 6 plus 4 is also already there. So if we solve this further, we can simply get this as, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं आगे. तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 30 I bar minus 12j bar plus 60k bar plus 40 I bar minus 8j bar plus 20k bar, that is to be divided by 10. So that it becomes equal to 30 I bar plus 40j bar, 40 I bar becomes 70 I bar, 70 I bar बन गया, minus 10j bar minus 8j bar becomes minus 20j bar, and 60 plus 20 becomes 80k bar, 80k bar, and that is to be divided by 10. So if we can take 10 common and cancel it out, then we can simply say this will be 7 I bar minus 2j bar plus 8k bar as a final answer, which is going to be there in this option. 7 I bar minus 2j bar plus 8k bar. So it is going to be C correct option. So in this way we can find out the velocity as well as the acceleration of the center of mass. Remember, center of mass has a second next property, that is about even if the forces are acting, suppose if external force is acting on the whole system, suppose कि external force कुछ ना कुछ act हो रहा है system के ऊपर, it is non-zero, then in that case the center of mass will follow all the Newton's laws and will follow the path which is expected by the bodies. मतलब external force zero होने के बाद जो हम देखते हैं कि the center of motion of center of mass will be acting according to the Newton's laws. तो सभी Newton's laws के हिसाब से इसका मोशन होगा. तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. सपोज कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का हम एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक बॉम्ब थ्रो करते हैं
तो यहाँ से हमने एक बॉम्ब थ्रो किया इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी के साथ सपोज, और ये जो बॉम्ब है वो धीरे धीरे ऊपर गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद अगर वो समझो वो ब्लास्ट हो गया सडनली, सपोज ब्रेक्स इन टू पार्ट्स। जैसे वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो हो सकता है कि उसका एक पार्ट जो है वो आगे चला जाएगा, इस तरह से मूव करेगा, और जो दूसरा पार्ट उसका है वो हो सकता है कि इस तरह से यहाँ पे नीचे चला जाएगा और यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को। तो ये हमको देखना है कि दिस इज द पाथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स व्हिच आर ट्रेवलिंग। So the two parts of this bomb are traveling in different directions. But अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता और ये पाथ फॉलो करके यहाँ पे गिरना चाहिए था। ये जो पाथ फॉलो करके वो यहाँ पे गिरना चाहिए था, तो ये पाथ वो फॉलो करेगा अभी भी, इवन इफ इट इज नॉट इट इज ब्लास्ट। अगर वो ब्लास्ट हो भी गया है तभी भी यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर वो ब्लास्ट होने के बाद भी वो वही पाथ फॉलो करेगा जो पाथ उसको फॉलो करना चाहिए था ब्लास्ट होने न होने के बाद। तो अगर ब्लास्ट नहीं होता तो वो जो पाथ फॉलो करना चाहिए था वही पाथ वो फॉलो करेगा अभी भी, सेंटर ऑफ मास अभी वो पाथ फॉलो करेगा। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। सो वी कैन से दैट द पाथ फॉलोड बाय द सेंटर ऑफ मास is actually this, which is shaded by this blue color। ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है तो ये होगा, इस पाथ से ये सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा, कैन सी दिस। बट एक्चुअली जो पार्टिकल्स है वो एक सिंगल बॉम्ब जो है वो जो ब्लास्ट हो गया दो पार्टिकल्स में फट गया तो उनका जो पाथ है वो कुछ और ही है थोड़ा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो वही रहेगा जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द कोलिजन और एक्सप्लोजन। इवन अगर सपोज दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर मान लो कि एक बॉम्ब है जो हमने एक्सप्लोर किया, सपोज एक पर्टिकुलर हाइट से हमने छोड़ दिया, सपोज एक बॉम्ब है यहाँ से हमने छोड़ दिया और ये सपोज सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड है, अभी ये धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, उसका एक्सेलरेटेड मोशन है, नो डाउट। But here, if you suppose consider that the bomb explodes at the some point here, तो यहाँ पे अगर वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है दो पार्ट्स में बढ़ता है, जिसमें से एक पार्ट जो उसका है वो इस तरफ निकल जाता है और दूसरा पार्ट इस तरफ निकल जाता है। तो इसमें हम देख सकेंगे आराम से कि जैसे ये पार्ट्स बनते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करके यहाँ पे नीचे गिरेंगे, तो ये रेगुलर पाथ फॉलो करेंगे, नो डाउट। ओके, सो वी कैन सी हियर basically even if the bomb blasts, but still the two parts will be thrown in different directions and they will travel along the different paths which are projectile motions, but still their center of mass at every point will follow the same path which is expected by the bomb to follow in the absence of explosion। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। This is the next property of center of mass, remember correctly। सर एकदा प्रॉपर्टी रिपीट करा ना। सर एकदा प्रॉपर्टी रिपीट करा ना सेंटर ऑफ मासची। देखो, the center of mass continues to move in the same with the same direction with the same motion as it is expected by Newton's laws, even in the absence of collision or explosion। The center of mass will continue its motion in accordance with the Newton's laws, which is expected in the absence of explosion or collision। तो इवन कोलिजन भी अगर होता है तभी भी वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज दो पार्टिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और अगर वो कोलाइड होते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास पहले जिस डायरेक्शन में जिस पाथ से मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में उसी पाथ से वो मूव करेगा, तो जो कि न्यूटन्स लॉ से गवर्न किया जाएगा। तो ये हमको समझना है। तो
is the second property we can say. Now we'll see some equations based on the same property. Let's read it once. Two bodies of masses m plus m and m minus m are connected to the ends of a light inextensible string, and the string is laid over a smooth fixed pulley. The system is released from rest. The velocity of the center of mass of the two body system t seconds after the release is. तो ये देखिए हमको ये करना है कि जिसमें मान लीजिए एक पुली पुली है, ये सपोज पुली है, हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और समझो कि इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच करके रखा है, और सपोज कि इसके ऊपर दो स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग इस तरह से यहाँ पे पास किया हुआ है और दूसरा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे इस तरह से पास किया है, और उसमें ये भी बताया है कि ये जो पहला वाला जो पुली पहला वाला जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर जो मास है वो लटक रहा है और उसका वैल्यू है m प्लस स्मॉल m, और दूसरा जो मास है वो उनको दिया हुआ है is capital M minus small m, and here obviously this whole system will just get accelerated downwards in this way. तो ये जो मास है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा जो सिस्टम है it will get accelerated like this. ये एक्सेलरेशन के साथ वो इस तरफ एक्सेलरेट होगा, बिल्कुल ये इस तरफ रोटेट होगा, क्योंकि ये मास हेवी है और ये मास थोड़ा लाइट है इसके कारण। और ये पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, निकल के रखा है, जो इस तरह से दिया जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम is given by the formula the net pulling force, remember correctly, net pulling force divided by the net mass being pulled, net mass that is being pulled. तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हम देख सकेंगे आराम से what is the net pulling force we can say. So the pulling force here in this direction it is m plus m into g, no doubt, and the force here in this direction is going to be m minus m into g, no doubt. But these two forces are just in opposite direction. We can think of this system to be similar to another system in which two blocks of the similar masses are just getting pulled in different directions. One is due to the force, that is m plus m into g, and the other one is m minus m into g in this direction here. And hence we can say that the net pulling force will be equal to the difference of these two, and hence the net pulling force has to be equal to the difference. तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा m plus m minus m into g, and that is to be divided by net mass that is being pulled, which is going to be simply sum of the two masses, that is m plus m minus m. So that we can say here small m gets cancelled in the denominator, and in the numerator we can see capital M gets cancelled, and hence the acceleration of this whole system happens to be simply equal to 2 small m into g upon 2 into capital M into g so simply 2 into capital M. So we can cancel these 2 also and simply get this acceleration to be equal to small m upon capital M into g. तो ये हमारा एक्सेलरेशन मिल गया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये वाले फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है वो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, और ये जो दूसरा मास है वो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो उनके एक्सेलरेशन अपोजिट होने के कारण अगर हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज इक्वल टू, जब दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है तो हमको ये करना पड़ता है m1 into a1 बार प्लस
m2 into a2 bar, that is to be divided by m1 plus m2, no doubt. तो ये हमको यूज करना है। और यहाँ पे m1 मतलब क्या है हमको पता है ऑलरेडी, m प्लस कैपिटल M है, सॉरी कैपिटल M प्लस स्मॉल m है, तो ये है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमको नीचे की तरफ होने के कारण, अगर सपोज हम नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो अगर पॉजिटिव ले लेंगे, ये हमारे इंटरवेंशन के अंदर अगर नीचे का जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो हम कंसिडर करेंगे इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ऊपर का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। तो ऐसे केस में हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव। इस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन उसका जो वैल्यू है वो तो स्मॉल m अपॉन m इंटू डी जी ही रहने वाला है। तो ठीक है, फिर हम उसको सिंपली a रख देंगे जो कि हमको यहाँ पे मिला हुआ है a। और जबकि यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में जो दूसरे वाले का एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव, और उसके लिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस दूसरे वाले का जो मास है वो हमको पता है ऑलरेडी m माइनस स्मॉल m इंटू ए, ऐसा आ जाएगा। और नीचे जो हमको ऐड करने हैं दोनों मासेस तो वो ऐड होंगे ऑलरेडी, तो वो बन जाएगा स्मॉल कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस capital M minus small m, so that small m gets cancelled and capital M just get doubled. So then we can say this will be simply equal to, here a can be taken common, तो अगर हम a को कॉमन ले लेंगे बाहर तो अंदर में जो बचेगा हम देख सकते हैं आराम से कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m, that is multiplied by a and here divided by 2 capital M. So here you can say this capital M gets cancelled in the numerator and we are left with 2 small m upon 2 capital M into a, and again this 2 gets cancelled and what we are left with is simply small m upon capital M into a, but a का जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो वो हमको मिल जाएगा small m upon capital M again into g, so that we can get this as simply small m square upon capital M square into g. This is going to be the acceleration of center of mass, you can say. Now we are in a position to find out the answer. तो अभी हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है कि the system is released from rest. What does it mean? The initial velocity is going to be 0. We have to find out the velocity of center of mass after t seconds. तो t seconds के बाद का उसका velocity निकालने के लिए हमको simply first kinematic equation sufficient होगा। First kinematic equation कहता है velocity of center of mass after t time will be equal to velocity of center of mass initial plus acceleration of center of mass into time t. So if you want to find out the velocity of center of mass after time t, then we have to put this initial velocity which is going to be 0 because the system starts from rest, plus the acceleration of center of mass which is obtained to be here m square upon capital M square into g into t. That is, this is going to be the final answer. So m square upon capital M square into gt, which is there in the option 3, gt into m square upon capital M square. So this is going to be the correct option, remember. तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल करता है। The external force is the only force which controls the velocity of center of mass or motion of center of mass. Internal force doesn't affect the motion of center of mass. तो ये हमको इसी तरह से समझना है। Please read the question. Find the velocity of center of mass of the system given in the figure. तो यहाँ पे फिगर में जो दिया हुआ है तो ये एक तरफ x एक्सिस हमको दिख रहा है, दूसरा y एक्सिस दिख रहा है, और यहाँ पे एक किलोग्राम का जो मास है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा जो मास है वो 2 किलोग्राम का है और वो 30 डिग्री एंगल पे इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का हमको वेलोसिटी निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इनका जो वेलोसिटी है वो हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ I bar and J bar. We can say that m1 here is going to be 1 kilogram, no doubt, and at the same time v1
फर्स्ट वाले जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन में हम जो है वो आई बार डिनोट करते हैं. आई बार इज द unit vector along x-axis. So we can say that this v1 bar is actually going to be equal to 2 times of I bar. Alright. And m2 दूसरे पार्टिकल का जो मास हमको दिया हुआ है वो है 2 किलोग्राम. But at the same time उसका जो velocity है वो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा. So let us resolve this velocity in two components. One is along x-axis, this one here. इसको हम बोलेंगे x component उसका, और जो दूसरा है उसको बोलेंगे y component, which is along this negative y axis. तो जैसा कि हम जानते हैं 2 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में तो हम देख सकेंगे कि जो उसका जो कंपोनेंट्स है, तो ये पहला वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको हम लिख सकेंगे 2 into cos 30 क्योंकि वो एडजेसेंट है इसलिए, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो लिख सकेंगे इस तरह से 2 into sin of 30, तो 2 sin 30. ये दोनों कंपोनेंट्स जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और इस वाले कंपोनेंट को हम आई बार चिपकाएंगे और इस वाले को जे बार चिपकाएंगे, माइनस जे बार इनफैक्ट, because it is in the negative direction of y-axis. So you can say this will be v2 bar is going to be actually into cos 30 into I bar plus this is 2 sin 30 into j bar. Okay. तो ये जो है इसको भी हम और सॉल्व कर सकेंगे आराम से. 2 into cos 30 का मतलब होता है हमको पता है √3/2 into I bar plus here it is 2 into 1/2 sin 30 मतलब 1/2 into j bar, और इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो 2 2 कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा √3 into I bar प्लस 2 2 कैंसिल होके सिंपली j bar. तो ये बन गया हमारा v2 bar. Okay. Now we are in a position to find out the velocity of center of mass by the formula which you already know. Velocity of center of mass is actually m1 जे बार ना हाँ माइनस जे बार हाँ माइनस j bar, right. Sorry, it will be minus of j bar, right. And then we can say m1 into v1 bar plus m2 into v2 bar divided by m1 plus m2 as a final, so that we can get this as, तो अभी m1 तो हमारे पास 1 है और ब्रैकेट में आएगा v1 बार का वैल्यू जो कि 2 I बार है सिंपली, प्लस m2 के बदले आ जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर उसका वैल्यू v2 बार का वैल्यू जो कि √3 I बार माइनस j बार है upon 1 plus 2 which is going to become 3. Alright. So the next step will be here. So 2 into 1 is 2 I bar only, plus here it is 2√3 I bar minus 2 j bar upon 3, so that this 2 I bar plus 2√3 I bar becomes actually 2 common, and we are left with 1 plus √3 in the bracket into I bar as it is minus 2 j bar, that is to be whole divided by 3 as a final, and this is going to be the final answer. And just make sure. So basically 2 into 1 plus √3 मतलब 2 plus 2√3, so it is already here. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वो ऑप्शन, और minus 2/3 j bar. तो ये जो ऑप्शन है A is going to be the correct option.